Okay, so what did we learn yesterday? कल की क्लास में आपने क्या सीखा? So आपने ये सीखा कि कल हमने आपको ये बताया था कि yes to the solution when we are looking for the solutions to the Schrödinger equation जो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मुलेट किया गया, तो उसमें the solutions won't come so easily. It is और जब आप सॉल्यूशंस में हम क्या चाहते हैं, वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड जो वेव का कैसे चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड उसको बताता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर एक थ्री डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव है, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आपको क्या चाहिए? एम्पलीट्यूड एंड हाउ द एम्पलीट्यूड, यू शुड नो द एम्पलीट्यूड एंड हाउ इट वेरीज विथ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं और उसके साथ कैसे वो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होता है, उसी को डिस्क्राइब करता है वेव फंक्शन। तो जब आप इलेक्ट्रॉन एज अ थ्री डायमेंशनल वेव कंसिडर कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वर्ड भूलना जरूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट। एंड ये जब आपने रियलाइज किया कि अगर हम एम्पलीट्यूड ग्राफ प्लॉट करना है मुझे एम्पलीट्यूड का विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन एक्स वाई जेड मिला के तीन कोऑर्डिनेट तो यही हो गए, चौथा कहाँ से आएगा? तो तब फिर दिक्कत हो जाती है, राइट? सो दे इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ फोर डायमेंशनल ग्राफ। आवाज आ रही है? ओके, जस्ट आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हेलो, अब आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो कल जो हमने आपको बताया था वो यही था कि जैसे ही आप मतलब पहले तो जब हम इक्वेशंस को फाइनली फॉर्मुलेट करना शुरू करते हैं कि किस तरह का इक्वेशन होना चाहिए, क्या सोल्व, पर उससे भी पहले हमें ये रियलाइज करना होगा कि भी अगर एम्पलीट्यूड विथ, अगर वन डायमेंशनल वेव है तो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विथ एक्स एक्सिस एक, अगर टू डायमेंशनल वेव हुआ तो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, थ्री डायमेंशनल वेव हुआ तो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। मतलब आप समझ रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट अ फोर डायमेंशनल ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया, सजेस्ट किया गया कि जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं इनको आर थीटा फाई में चेंज किया जाए। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जब आप इसको चेंज करते हैं, then this psi, the wave, electronic wave function which was earlier dependent on xyz, now depends on r theta phi. Another, now there's additional advantage is that there it can split into three functions which when multiplied together they regenerate the original total electronic wave function. So ये जो है, when we convert this Cartesian coordinate into spherical coordinates, the overall wave function splits into three wave functions. Two of them depend on angles, depends, so ये जो कैपिटल R है ये स्मॉल r पे डिपेंड करता है, so this is a radial wave function, and दोनों जो एंगल पे डिपेंड कर रहा है दैट इज कैपिटल थीटा है, वो स्मॉल थीटा कोऑर्डिनेट है उस पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल फाई इज अगेन, सो टुगेदर वी आर राइट इट एज y theta phi, so this is our angular angular wave function जो, so angular wave function tells you about variation of amplitude with respect to angles, so it describes variation of amplitude with theta and phi, right?
whereas this particular thing is radial wave function. This is called radial part of the total wave function, so radial wave function. And this depends on, so it shows variation of amplitude with with r, the radial distance, right? स्मॉल आर का जो, सो इसको, सो अब आपको, अब आप इन दोनों फंक्शन को डिफरेंटली अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और ग्राफ भी बना सकते हैं. So when you are plotting radial wave function, it is a two-dimensional graph. When you are plotting angular wave function, it gives you a three-dimensional graph, right? Amplitude and the theta and phi. So three dimensions. When you are plotting this, so this will give you 2D graph. So now अब ये सिचुएशन हैंडल करने लायक है. पहले जो सिचुएशन बन रहा था जब आप एक्स वाई जेड को डायरेक्टली ले रहे थे, इट वाज साइमल्टेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. यू कैन नॉट सेपरेट एक्स वाई जेड, मतलब अलग अलग तीन में स्प्लिट नहीं हो पा रहा था, और प्लॉट करना मुश्किल हो रहा था. यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द amplitude with position. But when you do this thing, you can perform, you are able to make things. So now you can take the angular part, analyze it separately. You take the radial part, analyze it separately, and in this manner, you can get the idea of the total wave function. Okay. So this was the thing. ये मेन चीज है जो आपको समझना है कि हमने इसको कंबाइन एंगल्स, एंगुलर डिपेंडेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड वेरिएशन, वो जो पार्ट था उसको, आई थिंक इस, ओके. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो आपका है, ये दोनों मिला करके एंगुलर पार्ट हो जाता है, जिसको कि हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रेडियल पार्ट है. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस आर. और अभी हमारा डिस्कशन अगले एक दो क्लासेस में इसी पे फोकस रहने वाला है, ऑन द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे आप मतलब अगर आप ये सारे रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन अच्छे से समझते हैं, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग बेटर. ठीक है, नहीं तो बॉन्डिंग में जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वगैरह ड्रॉ करते हैं, यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड कि कैसे ड्रॉ करना है, ये कैसे होगा. अगर ये सब चीज़ें समझ में आ रही, यू कैन वेरी वेल डू द थिंग. हाँ. सो अब एंगुलर डिपेंडेंस, सो वी आर मूविंग अहेड विथ, sorry, where was that? Okay. So the form of solutions, the solutions, इसके लिए जो है जो मैथमेटिकल इक्वेशन हैज टू बी डिजाइंड एंड चेक्ड विद द things in the, substituted in the equation and find whether it's fitting or not. So finally the solutions has something like exponential form. More importantly, I will tell you, there is one more thing. इस स्लाइड से आगे निकलते हैं, एक और स्लाइड में मुझे थोड़ा और इंटरेस्टिंग फॉर्म में है. So basically you will have this thing. We arrive at this point that the radial wave function will take this form. It has three components. One is the r to the power L. The second part is the polynomial r, which is called the Laguerre polynomial. And then you have exponential form. So you have e to the power something z r by n a naught. एक ये पार्ट होगा, एक पॉलिनोमियल होगा बीच में, Laguerre, sorry, polynomial, and polynomial, and then this is the r to the power l. So ये इसमें इंटरेस्टिंग होता है. r to the power l वाला पार्ट जो है, इसको देखिए, when r is 0, l is 0, then r to the power l is 1. In all other cases,
ठीक है, दिस इज वन पार्ट. When r is 0 but l is not equal to 0, ये 1 2 3 कुछ भी होगा, उस केस में r to the power l will be 0. It will be 0. So all other functions, so except for l is equal to 0, that is for s orbital, उस केस में the amplitude is finite at the, it is, in fact it is the maximum, it has maximum value of the amplitude at the nucleus. और बाकी सारे l is equal to 1 2 3 उन सब केस में, so when l is equal to 1 2 or 3 or so on, this function at will be 0 at the nucleus. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिए. सो देयर थ्री पार्ट्स. अब तीनों का रोल क्या है ये बता दें. सो डिफाइंस डिके, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल डिके जो फॉर्म है ये आपको ये बताता है कि e to the power minus z r by, it takes the form of n by a naught. सो एसेंशियली सब में एक्सपोनेंशियल डिके कॉमन होगा और वो z जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है r n a naught इस तरह से आएगा. n is the principal quantum number. So this is your decay, exponential decay. What does this indicate? It indicates that the amplitude must become 0 at infinity. Amplitude of the wave must become, so this function ensures that becomes 0 at infinity, right? So वो decay को दिखाता है. पॉलिनोमियल फंक्शन जो अभी हमने यहाँ पे बात की है, इसका ये क्या दिखा, दिस इज, अब हम कह रहे हैं वेव है ना, तो वेव में ऑसिलेशन होगा. दिस इज टू अकाउंट फॉर द ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ द थिंग, टू शो द ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ द वेव, ऑसिलेटिंग, टू अकाउंट फॉर द ऑसिलेटिंग नेचर, कि अप डाउन क्रेस्ट ट्रफ ऐसा जो कुछ बनेगा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, ये सब जो ऑसिलेटिंग नेचर है उसको अकाउंट करने के लिए ये वाला पॉलिनोमियल आया. डिके, एक्सपोनेंशियल डिके टर्म इसलिए है कि वो दैट इंश्योर्स दैट योर एम्पलीट्यूड बिकम्स जीरो एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? So these are important points. And r to the l power l is a function, this is the effect of angular momentum, जो कल हमने डिस्कस किया था, याद है आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का जो कहा गया एंगुलर मोमेंटम वाली पार्ट, हाँ, we discussed about angular momentum. So when l is equal to 0, the angular momentum is 0, ये भी हमने बताया आपको. और इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि यू हैव जीरो एंगुलर मोमेंटम, जीरो. तो जब एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जीरो है ही नहीं, then it will tend to have maximum amplitude. The wave, the electron wave, the three-dimensional electron wave will have maximum amplitude at the what, at the nucleus, when r is 0, at nucleus r is 0. उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपको for l is equal to 0, ये स्पेशल आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वेव इज हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड at the nucleus, very different from all other waves. और बाकी सारे 1 2 3, l is equal to 1 2 3 gradually, so all they have zero amplitude at the nucleus. For l is equal to 1 2 or 3, they have finite momentum which is given by under root, देखिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, कभी भूलना मत. So this is how you describe the angular momentum. The value of angular momentum can be easily calculated if you know the, ठीक है, angular momentum is given by this term.
So all others have zero amplitude at the nucleus. ठीक है. Then we also discuss, so square of the amplitude gives you electron density. ये आपको मैंने postulates में बताया है. एम्पलीट्यूड आप वेव फंक्शन का स्क्वायर करो, मतलब यू आर स्क्वायरिंग द एम्पलीट्यूड एट एवरी पोजीशन, सो यू दैट गिव्स यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ऑफलाइन क्लासेस याद कीजिए, ये मैंने आपको बताया था जब पोस्टुलेट्स में आपको डिस्कस कर रहा था, उस टाइम बताया था. सो स्क्वायरिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड गिव्स यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. दैट मीन्स दैट एस पी डी सॉरी पी डी एफ हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द न्यूक्लियस. बट अभी जो हमने देखा उसके लिए फॉर x, so square of amplitude gives you electron density. That also means that for L is equal to 0, that means s orbital, so square of amplitude, it has maximum value of the wave function, that is the maximum amplitude at the nucleus. So maximum electron density, so it has, you have maximum electron density at near the nucleus, nahi, at the nucleus, when r is 0. घबराइए नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. r is equal to 0, ठीक. और आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी इज अ डिफरेंट टर्म व्हेन यू मल्टीप्लाई डेंसिटी विद द वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv, देन यू गेट द प्रोबेबिलिटी जो आप ट्रेडिशनली 11th क्लास में पढ़ते आए हैं. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर s ऑर्बिटल इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस. फॉर ऑल अदर ऑर्बिटल्स, if the electron wave is described by L is equal to 1 2 3, then they will have zero electron density, zero amplitude, and hence zero electron density. Square of amplitude gives you psi amplitude with radius. इसका वेरिएशन को दिखा रहा है. psi square gives you electron density. So electron density variation with r. So you just, when you square it, you get that idea. Okay, so very important points which easily you can understand. Okay, so इसका मतलब और एक चीज क्या दिख रहा है इसमें आपको खास. सो 1 2 एंड 3, सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बढ़ता जाएगा, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. जैसे जैसे एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, when L increases, there is a tendency for the amplitude to be zero at the nucleus, and then it rises uh, slowly. So see, very zero, it is almost going very close to the zero and then rising. जब L is equal to 3, it is 0 almost 0 till a longer point, then starts rising. So that is, electron density is nearly 0 for a longer distance, and then it picks up, it increases, right? So, or we can say that the electron tends to, as the electron wave has higher angular momentum, it tends to keep away from the nucleus. वो न्यूक्लियस से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, और उसी का आप यहाँ पे असर देख रहे हैं. सो वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, वी आर, व्हेन वी एनालाइज द wave function, it will be appearing like this, very role of L. And एक और चीज बताना था, कहाँ गया वो, हाँ. सो एंगुलर मोमेंटम पोटेंशियल के बारे में मैंने कल आपको बताया था. एक मिनट, कहाँ गया वो पॉइंट, हाँ. पोटेंशियल एनर्जी मेरा कहाँ गया, oh sorry, I think I have just messed up. It was another slide where I had put that thing, and then I somehow,
So I talked about potential energy. Yes, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमारा क्या डिस्कशन था. दिस रेडियल वेव फंक्शन इन एडिशन, सो जहाँ जहाँ आपका L ग्रेटर देन 1 है, सो देयर इज एडिशनल टर्म विच कंट्रीब्यूट्स टू द पोटेंशियल एनर्जी. ये तो वेल नोन है. The first term is well known, that proton will attract electron, so there will be Coulombic attraction, and that is Coulomb potential that gives you. So ये एक पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स एक तो आपको पता है पहले से. और जब व्हेन L इज नॉट इक्वल टू 0, this term will also contribute. This is the centrifugal effect. Higher the angular momentum, higher is the value of this potential energy term arising due to the centrifugal effect. So the concept of classical physics is incorporated over here. So when we are talking about L is equal to 0, it has no angular momentum, and the effective potential is purely Coulombic, attractive at all radii. बट और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r, and this one is proportional to 1 by r square. So this will decreases quickly. As r increases, the decrease in this second term will be decreases slowly as compared to that. As you are moving outwards, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्लोली धीरे धीरे डिक्रीज करेगा. और वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये भी है कि व्हेन r इज स्मॉल, this value will dominate. The second term dominates at a distance very close to the nucleus. So when you are very close to the nucleus, this term dominates closer to the nucleus. जितना आप पास आते जाते हैं, न्यूक्लियस के पास आएंगे, L का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ये उतना ही हाई होगा. दिस विल क्लोजर टू द न्यूक्लियस. और ये ओवरऑल, दिस इज यू कैन ऑल्सो नोट वन मोर थिंग, दैट दिस इज अ नेगेटिव टर्म, whereas this one is a positive term. Centrifugal effect is a positive term. So if this term closer to the nucleus, this term will dominate. Okay, this term will dominate, and so if it becomes greater than the Ze by 4 pi epsilon r, then the overall potential energy will turn out to be positive. So this is what happens when you analyze this very. Okay, so this is what is happening here. You can clearly see closer to the nucleus, distance, so approaching the nucleus, close to nucleus, very close to the nucleus, at a very short distance, you find this thing happening, that far away from the nucleus, both are same, far away from nucleus, almost same, nearly same, you can say. But as you are approaching this thing, the positive term is increasing when L is not equal to 0, and that makes the at some point it becomes greater than the Coulombic potential. And when it becomes greater than the Coulombic potential, you see a positive contribution rising up, and जितना आप क्लोज मूव करोगे वो पॉजिटिव होता जाता है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ये सब जगह आपको मिलेगा नहीं. ठीक है, सो क्लोजर टू द न्यूक्लियस दिस बिकम्स, अब ये देखिए y एक्सिस पे 0 है, 0 से ऊपर चला गया, पॉजिटिव ऊपर की ओर जा रहा है, मूव कर गया. So closer to the nucleus, and this is happening because of the centrifugal effect. Centrifugal
effect, it dominates at a shorter distance, very close to the nucleus. Okay, so ध्यान देने वाली बात है. So that is gives rise to the positive contribution, and when which is very large when you are approaching the nucleus very close to it. So इसका मतलब ये भी है, why I am discussing all these points, that अगर potential energy में इतना ज़्यादा difference है nature, then for L is equal to 0 it is a constant decline. For centrifugal तो effect है ही नहीं, 0 हो गया उसमें. Only contribution is electrostatic potential, और वो decrease करता जा रहा है जितना है. It is a negative term, so it goes on decreasing as long as okay. So this also indicates that the form of, when we plot the overall amplitude variation with radius r, that will be very much different for L is equal to 0 and when L is not equal to 0. दो cases में near the nucleus you'll find a very different thing happening. So let's come back to the other slide where I was. हाँ, so ये मैंने आपको बताया. So zero. So we have this form of the energy when we also comes from this. So to describe a radial wave function, to write the complete radial wave function, we need to know quantum numbers n and l both. And it is the n, the quantum number n, which also tells you about the energy of the system. And energy is given by, it is directly proportional to minus z square by n square, right? It's directly proportional, z square by n square. This is what you can see. Rest of the other terms are constant, which we use usually tell put it in terms of Rydberg's constant. बाकी सारी चीजें constant है, z square और n square. So energy is inversely proportional to the n value, quantum number. The mass term, the mu, the reduced mass of the system, this is there. And so energy is negative. Why it is negative वो भी हमने discuss किया हुआ है last class में. So there are three different terms coming which make up the radial wave function. Exponential decay is one thing which ensures that at the extreme distance, at infinite distance, the amplitude becomes zero. जो infinite plus infinity या minus infinity दोनों पॉइंट पे जीरो हो जाना चाहिए, तो वो इंश्योर करने के लिए एक्सपोनेंशियल टर्म है. और इससे जो पॉलिनोमियल एल है वो ऑसिलेटरी नेचर के लिए है, बीच में जो फंक्शन है. और r to the power l है वो, that is to describe the how the amplitude will change very close to the nucleus. उसको बताने के लिए जो मैंने डिस्कस किया, when r is equal to 0, l को भी 0 रखो और एक l को नॉन 0 रखो, तो आपको इस तरह से बताया जा सकता. So when we are writing this thing, you can see there are two things, zr by na naught. This is a thing, that something that you will find appearing in your equation. N is the quantum number, r is the radial distance, z is the number of protons in the nucleus. Okay, a naught is the बोर रेडियस, जो बोर मॉडल्स में जो आया था उसी को डिस्क्राइब करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर सिस्टम. सो सारा जो डिस्क्रिप्शन है हम बोर्स रेडियस के मल्टीपल में ही आगे डिस्क्राइब करते हैं. सो ये एक कांस्टेंट है, दिस इज बोर्स रेडियस. इट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस क्योंकि बोर का जो कैलकुलेशन था हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में, जो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस ऑर्बिट का रेडियस निकाला था, that is exactly the same which comes from this
quantum mechanical calculations. So let us analyze some of the radial wave functions which, if it is given to you, how it looks like, how it appears. So let me here also tell you what we mean by saying, when we say orbital, what does it mean? So this is very simple. An atomic orbital is a function that describes one electron in an atom. सबसे simplest, yes, most modern description of atomic orbital is this. ठीक है, कुछ नहीं, वो जो बचपन में आपको सिखाया गया था कि 90% प्रोबेबिलिटी जहाँ पे होगा उसको ऑर्बिटल कहेंगे, वो सब कुछ नहीं. सिंपल. इलेक्ट्रॉन एक वेव है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो वेव फंक्शन आप लिख रहे हैं इनसाइड इलेक्ट्रॉन इन विद इन एन एटम, वही आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है. इन अनदर वर्ड्स वी कैन से one electron wave function is an atom of an electron in an atom is atomic orbital. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बाकी कुछ नहीं. फॉरगेट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, द वेव फंक्शन विथ n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा हम कुछ डिस्क्राइब करते हैं, सपोज द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, l इज 0, वी कॉल इट इज 1s orbital. And then we also say that the electron wave, which is, so this is the, so uh, it is describing a form of electron wave, 3-dimensional electron wave, उसका एक पार्ट है. मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये आपको क्वांटम नंबर चाहिए. yes. लेटर ड्राफ्ट किया किसके लिए? ओके, हेलो. यस सर. आ रहे हैं, हाँ सुन रहे हो ना. तो देख लो, एटॉमिक ऑर्बिटल यही है. बस जो आप अभी आपने जो उसको एक 3-डायमेंशनल वेव की तरह हम विजुअलाइज कर रहे हैं, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम फंक्शन लिख रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन विथ पोजीशन जो डिस्क्राइब, वही हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है. और सिंपली वी कैन से दैट वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल. So when n is 1, l is 0, we say that it is 1s orbital, and the electron which is described by this function is said to be in 1s orbital. Or we can also say that the electron has a 1s orbital state. बात एक ही है, electron is in 1s orbital or electron has 1s orbital state. That's, it means the same thing. ठीक है, so we will see we will see why that 3 to p orbitals. We'll learn more about this. So let me show you one by one some of the first few nature of the solutions that we have. जो फाइनली जो सॉल्यूशन निकल के आता है, उसमें से कुछ का हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है. सो पहला ये सॉल्यूशन है व्हेन n इज, ये जो 1 है ये n का वैल्यू है, और ये 0 जो है ये l है. सो फर्स्ट वन इज दिस exponential zr by a naught. This is a constant. So what you see here, if z is fixed, then this is ये आपका कांस्टेंट हो गया. दिस इज कांस्टेंट इफ z is fixed. मतलब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, if we are talking about only hydrogen, then this term becomes constant. ठीक है, and the variable is r and n, right, with radius. So what will be the profile? अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो आपको कैसा दिखेगा? If I try to plot it, capital R versus R, if you try to plot it, कैसा दिखेगा? When R is 0, ये 0 और ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वैल्यू इधर. कैसा ग्राफ बनना चाहिए? When R is 0, if
r is 0, this has maximum value. Okay, so it will be reaching start from somewhere here, maximum amplitude, and then it will go on decreasing. जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वो डिक्रीज करता जाएगा. So at it will become 0 at infinity, becomes 0. So this is the variation of amplitude with r. So this is the exponential decay profile. So exponential decay है ना, e to the power minus z r by a naught, n is equal to 1. So n a naught यहाँ पे आपको ऐसा आ रहा है. So ये आपको प्रोफाइल देखने को मिल रहा है e to the power. Okay, maximum value at the nucleus. Whole function has maximum value when it is r पे r0 है, e का value when if r is 0, e. So you understand this? आप समझ रहे हैं कि नहीं पता नहीं. What you understand now? If y is e to the power x, ये सब समझा है कभी कभी समझने की कोशिश की है. e to the power minus x, y is equal to, ये सब का ग्राफ आपने कभी सोचा है कैसा बनता है? देखिए आप अगर बेसिक चीज़ें नहीं समझ के रखेंगे ना, थोड़ी परेशानी होगी. अगर हम कहते हैं कि there is a function y which is depends as mx plus c, so then you plot the graph of y versus x. It will be something like this. It is a straight line. So linear increasing with this value becoming equal to c. This is equal to c and slope is m, right? ये ऐसा होता है. अगर हम कहें y is equal to e to the power x, तब क्या होगा? ये y और x को आप प्लॉट कीजिए तो ये एक्सपोनेंशियली बड़ी तेजी से राइज होगा शुरू में और फिर धीरे धीरे कांस्टेंट वैल्यू. दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अगर आप और अभी जो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज we are taking the solutions of the electronic wave function, जो रेडियल पार्ट ऑफ द फंक्शन है, वो उसका सॉल्यूशन हमारा इस तरह का आ रहा है, y इक्वल टू e to the power minus x. So in contrast to them, so this will have when e to the power x, if x is 0, y is equal to 1, maximum value. ठीक है ना, e to the power, and so it will have maximum value here. y को इधर प्लॉट करो, x को इधर, तो क्या होता है, ये यहाँ से 1 हुआ और धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा और फाइनली इन्फिनिटी पे 0 होगा, becomes 0 at infinite distance 0. So this is what you should know. So basically all the wave function, electronic wave function, have this exponential decay profile, exponential decrease. यहाँ पे जो exponential decrease आप देख रहे हैं, ये प्रोफाइल हमेशा सारे वेव फंक्शन में होगा, and that is to ensure that at infinity the amplitude becomes 0. Okay, so let's just so what we are trying to do, we are trying to understand one by one the nature of the wave functions and radial part of the wave function. So when we move to the next one, what we find, the next one is 2. So this was about 1s, this is about 2s orbital, n is, so this is the value of n and this is the value of
L. So you get, again look at this part, there is an exponential decay term here, but this time it is ZR by 2A naught. Here it was A naught. So the basic formula that you can think of is minus ZR by N A naught. So if N increases, the decay, so the decay here is, अब ZR by A naught था, उसका हाफ हो गया है. So the decay is now slower. तो जितनी जल्दी पहले वाले 1s के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिके कर रहा था, घट रहा था जितनी तेजी के साथ, इसमें स्लो होगा. द डिके इज स्लोअर. डिके इज स्लोअर नाउ. यू कैन सी दिस, क्योंकि ZR बाई A नॉट था, ZR बाई A नॉट के रेट से वो बढ़ाते जाओ, डिक्रीज कर रहा था. अब ये उसका भी हाफ हो गया है ना. As compared to 1s, in case of 2s, the decay of electron amplitude is slower. ये एक चीज नजर में आ रही है. और एक चीज नजर में आ रही है क्या, बीच में एक टर्म ये आ रहा है. So if you can calculate it, if so gradually, if you are increasing R, suppose if you are increasing ZR by 2A naught at some point, so you are moving from nucleus, ऐसा सोचो कि न्यूक्लियस से बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, एंड एट सम पॉइंट द ZR by 2A naught will become equal to 1. At that point, this whole term, this term becomes zero at when R is equal to 2A naught by Z, 2A naught by Z. ठीक है. So that is the point which we call at node. Node exists at, so when you have to, if you are given this such thing, you will find out there is a node in this case. पहले वाले केस में क्या था, एक भी नोड नहीं होगा, एम्पलीट्यूड इज नॉट बिकमिंग जीरो. नोड किसको कहते हैं, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से नेगेटिव एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन होता है ना, ऊपर से नीचे, क्रेस्ट से ट्रफ की ओर, तो उस बीच में जो जीरो होता है उसको हम नोड कहते हैं. जो इन्फिनिटी पे जीरो हो रहा है वो नोड नहीं है, जो न्यूक्लियस पे जीरो हो रहा है वो नोड नहीं है. नोड इज ओनली व्हेन यू हैव अ चेंज ऑफ साइन ऑफ द वेव फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, और बीच में उसके इस बीच में कहीं पे जीरो हो जा रहा है. तो जहां पे वो एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है ऑन गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन, और this thing, and vice versa. So that is, so you can easily find that it has one node. So this function, the 2s orbital that we are talking about, so हम क्या कह रहे थे, so what other points that you have learned here is that there are two functions that we are comparing right now. इसमें आपको no node, while the second point, this one node because of this is coming into the picture. ठीक है, इस तरह से आपको फंक्शंस देख के आप बता सकते हो कहाँ किस में नोड है, कितने नोड्स हो सकते हैं, ये सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो लुकिंग एट द फंक्शंस डायरेक्टली. इफ द इक्वेशन इज गिवन टू यू, look at the
सो व्हेन यू हैव l इज इक्वल टू 1, l का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2p ऑर्बिटल, द फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस. सो जो बीच में जो कुछ आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, हमने आपको बताया लेगेरे पॉलिनोमियल कहते हैं. एंड इसी इसी में जो नेचर ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे है. सो अगेन यू हैव द एक्सपोनेंशियल डिके, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल डिके पार्ट, एंड दिस वन ensures that zr by a naught when r is 0, look at this term, if r is equal to 0, this has r, capital R is becomes 0, right? Amplitude becomes 0. So keeping these things in mind, you can think of why so there is 0 amplitude at the nucleus. However, there is no node. Okay, node. Then in a similar fashion you can also see for the rest of the things. So there are many like that, 1 2 3 2 3s, again 3s. You have so exponential decay 3 minus zr by 3a naught. So see, zr by a naught, zr by 2a naught, zr by 2a naught, zr by 3a naught. So zr by na naught is the common term that you can see. So e to the power minus zr by na naught. So जो एक्सपोनेंशियल डिके जितना तेजी से 1s में हो रहा था उसका हाफ हो गया when n is equal to 2, and then it is becoming 1/3 of what, if you comparing this, it has become 1/3. So the decay of electron amplitude of the electron wave is even slower as compared to earlier. This was the factor half of that, and here decay is even slower. So इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड बहुत देर में न्यूक्लियस के पास सॉरी इन्फिनिटी पे जाके की तरफ जीरो होगा. So at a distance large far away from the nucleus, there will be significant amplitude of the wave. That's what we expect. जबकि जो 1s ऑर्बिटल होगा इसका जो एम्पलीट्यूड होगा बहुत जल्दी अप्रोचिंग जीरो चला जाएगा, बहुत जल्दी. ठीक है. सो उतना सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड आपको दिखेगा नहीं फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, नॉट एट इन्फिनिटी बट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बीच में कहीं पे. तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी. और पता है इसीलिए ये जस्टिफाइबल हो जाता है कि जब आप 1s और 2s ऑर्बिटल सर्कल सर्कल ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, 2s को आप बड़ा क्यों दिखाते हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाद में जाके डिके करेगी, बहुत जल्दी उतना फास्ट डिके नहीं हो रहा है एट so away from the nucleus it will have very significant electron density away from the far away from the nucleus, whereas for 1s it will decay earlier. So इस तरह से पैटर्न आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, और इसमें हम सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन आपको प्रेजेंट कर रहे हैं. लेट्स अगेन लुक एट दिस 1s and 2s solution. So this is what I told you, this is the equation. ये मैंने खुद से इलेक्ट्रॉन लिखा है आपको इक्वेशन एडिटर यूज करके इस तरह से. सो इसमें हमने फॉर दिस होल थिंग इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज टेकन एज के शेल का 1s. सो व्हेन वी हैव n इक्वल टू l इक्वल टू 0 ml 0 2s ऑर्बिटल, you can, this is the equation, we can again summarize this whole thing, and this thing is a constant for hydrogen atom, and only variable is this, so you can easily identify at what point you are getting the node. And then third, the 2p orbital is like this. So we can summarize, you have r term coming over here. So ये पहले नहीं था अभी तक किसी में, अलग से डायरेक्ट r का मल्टीप्लिकेशन टर्म आ रहा है. So when r is 0,
this small r, the distance is 0, small r is 0, the whole function goes to 0. So now look at the plot. Now अगर आपने इतना विजुअलाइज कर लिया है, अब आप इसको प्लॉट कीजिए, देखिए कैसे दिखे. सो फर्स्ट वन इज द वन एस ऑर्बिटल. वन एस ऑर्बिटल देखिए मैक्सिमम वैल्यू at when r this is 0, when you are at the nucleus the distance is 0, r small r is 0, that is maximum value, and then the amplitude goes on decreasing and becomes 0 at infinity. So this is the profile. There's, you can see there is no node. Next, 2s orbital. 2s, again what you see here, maximum value when is at the nucleus 2s, again maximum value at the nucleus, वो डिक्रीज हुआ. अब इसमें क्या है कि एक नोड यहाँ पे आता है, r का वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, एट सम पॉइंट zr/2a नॉट इज इक्वल टू 1, और उस पॉइंट पे वो 0 हो जाएगा, और उसके बाद जब r को फर्दर इंक्रीज करेंगे इट विल टर्न नेगेटिव, एंड सो दिस इज द positive sign of the wave function. So this is, sorry, this one is your node, and what is the value of r at r is equal to 2a naught by z. Okay, so that is, so this is 0, और उसके बाद फर्दर जब आप r को इंक्रीज करते हैं, this whole thing becomes negative, the function becomes negative, and so this is reaches a maximum, and then this decays exponentially. So this is your exponential, reaches a maximum on the negative side, and then exponential decay. Exponential decay becomes 0 at infinity. At infinite distance it will become 0. So this is the profile that you see. फिर इसी तरह से अगर आप 3s orbital, this is 3s orbital. 3s orbital में भी again all s orbitals have maximum amplitude of the wave at the nucleus. सारे s orbitals का, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन 1s 2s 3s s orbital maximum amplitude at the wave at the nucleus, and then it decays. Then you see you will have, this is a quadratic equation which will give you two nodes, right? When you solve this quadratic equation you can get that. So first node appears here, another node, so these are the two nodes. समझे? नोड किसको कह रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के प्रोसेस में जो बीच में जीरो हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड जीरो हो जा रहा है बीच में, उसको हम नोड कह रहे हैं. ठीक है? So what is a general trend that you see here? Then this is 2p orbital. Now s orbitals के बाद 2p का देखिए पैटर्न. This is the equation. So you start with r is equal to 0, this whole terms becomes 0, and so यहाँ पे 0 है. It will rise to a maximum and then exponential decay exponentially. Nodes, so there is no node in this case. ठीक है? अब आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि हाउ मेनी नोड्स विल बी देयर और नॉट? आप एक ट्रेंड देख रहे हैं, 1s में कोई नोड नहीं था, 2s में था. Number of nodes is equal to what a trend you can see, number of radial nodes in the radial wave function. If you are looking for nodes, number of nodes in the radial wave function is equal to n minus l minus 1. देखिए ये फिट दिस थिंग, ध्यान दीजिएगा all of you, how you can find the number of nodes, n minus l minus 1. Pretty simple. All s orbitals have maximum
amplitude of the wave and so maximum electron density at the nucleus, right? All s orbitals. Whereas p orbital में जब हम जा रहे हैं तो हाँ राइट है ठीक है बाय ओके सो अगेन यहाँ पे नहीं ठीक है n माइनस एल माइनस वन कितना है l is 3 l is 0 minus 1 so 2 number of nodes is 2 in this case इस तरह से आपको बहुत इजी हो जाता है जब आप actually you can predict all these graphs without knowing the actual equation just आप पैटर्न को एक बार समझ लें नंबर ऑफ नोड्स आपको पता है और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये एग्जाम में रहेगा 15 नंबर का रहेगा ध्यान दीजिएगा अच्छे से समझ लीजिए आपको असाइनमेंट भी देंगे इसके लिए ठीक है जो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बाद में मुश्किल हो जाएगी उनको ठीक है इसको प्रैक्टिस करना होगा ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नोड्स हाँ इट्स वेरी इजी n माइनस एल माइनस वन और नोड्स किसको कह रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है सो p ऑर्बिटल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2p ऑर्बिटल 2 and l so there is no node here number of nodes so again number of nodes n minus l minus 1 so 2 1 no node you can easily see this thing so exponential decay so इसमें आपने क्या दिखा at the nucleus the amplitude is 0 amplitude 0 है तो square of amplitude भी 0 होगा electron density is 0 at the nucleus for this particular case 2p orbital contrast क्या है s orbital में चाहे 3s हो या कोई भी amplitude of the wave is maximum at the nucleus square of amplitude gives you electron density so electron density is also maximum at the nucleus for 1s 2s 3s any s orbital okay maximum electron density at the nucleus when r is equal to 0 ठीक है बाकी सारे p d f सब के लिए इलेक्ट्रॉन जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है वो 0 हो जाएगा एट द न्यूक्लियस एंड electron density will also be 0 square of amplitude gives you the electron density and then it rises sharply to a maximum and then decays exponential decay so this part is your exponential so you are realizing exponential decay profile है ये वाला part this part is rising to the maximum and then this exponential decay right कैसे वो डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियल डिके बिकमिंग जीरो एट इंफिनिटी similarly when you are talking about 3p number of nodes will be equal to n minus l minus 1 again substitute 3 minus 1 so it turns out to be 1 तो एक नोड आएगा तो जब आपको कोई भी दूसरा ऑर्बिटल है न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल छोड़ के कोई भी दूसरा ऑर्बिटल एनी अदर ऑर्बिटल except s orbital any other orbital is there be sure that amplitude will be 0 at the nucleus then it will rise to the positive amplitude some on this side and then it turns negative like this depending on the number of nodes so where the node will exist कहाँ हो हेलो सब लोग हैं find out the node where is the node
How will you find? Equation is given to you. 6a node by r. Yes, very simple. So जब आपका ऐसा लीनियर फॉर्म में है तब तो बहुत आसान है. जहाँ पे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लेता है वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको. बट अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी टू लोकेट द रेडियल नोड. कहाँ पे वो जीरो हो रहा है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर इट बिकम्स जीरो एंड दिस इज माई नोड. पॉजिटिव से नेगेटिव साइन की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जहाँ पे हो रहा है और बीच में वो जीरो हो जा रहा है, उस पॉइंट को नोड कह रहे हैं. So this is again 3D orbital. So number of nodes, again nodes will be n minus l minus 1. So 3 minus 2 minus 1 0. No, so there is no node in this. So this is the empirically observed thing, that number of nodes in radial wave function is n minus l minus 1 number of nodes. Position of nodes you will have to know by incorporating कौन है किसी ने पिंग किया. ओके सो आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट. ख़त्म करते हैं आज का. ओके सो इस तरह से पैटर्न्स बहुत सिंपल है और इसको लेके आगे अभी हम डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी are slightly different terms. Please do not confuse. S orbital's electron density is maximum at the nucleus, but when you calculate the probability, wait for me, probability is given by density into volume, electron density into volume. So we will talk about it then in the next class. The volume term becomes zero when r is zero, and that's why probability becomes zero. That will be in the next class we will discuss that. Okay. हाँ सो फंडामेंटली यही गलती करते हैं लोग. जेटीडी में भी जंप है. दे आर शोइंग द वेव फंक्शन एंड देन स्ट्रेट अवे दे मूव टू प्रोबेबिलिटी. बट इफ यू वांट टू हैव अ gradual logical discussion, then you should have wave function, electron density, then probability. Okay, so that's what we will discuss tomorrow. क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एस ऑर्बिटल्स के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है न्यूक्लियस पे. आपको पता है नोबेल प्राइज मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिला था, के लिए मिला था. मॉसबार को नाम ही उसी के नाम पे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है. उसमें न्यूक्लियस पे जो एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उससे कितना कुछ चेंज हो जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे असर पड़ता है, उसको डिस्कस किया जाता है. सो न्यूक्लियस का है, इट इज़ अ प्रूवन. न्यूक्लियस पे एस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम है. इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट बियॉन्ड डाउट. ओके, probability is a different term. We will discuss how it becomes zero in the next class.